छि बट फिर भी आमे आउथरे रिवाइज करि दवा आज्ञा Yes. सो मु एटा शेयर करूची शेयर स्क्रीन करूची गोटे मिनिट हां तो मु गोटे थोर फर्स्ट रीड मारी दोची तो केंदी प्रोनाउंस होची कोन होची लेटर गुडा को देखो तापरे मु पूरा टेक्स्टटा बुझेबी ओके आज्ञा मैम रीडिंग मारे तो एटा गोटे फर्स्ट चैप्टर हमर फ्लोज जहार ऑथर हेले GL फ्यूंटस ओके तो से ले हैव यू एवर written a letter to God? Did you ever come across someone writing a letter to God? People believe faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Acha, Lenko is a farmer who writes a letter to God asking for some money when his crops fail. Does Lenko's letter reach God? Does God send him the money? Think and try to answer these questions. Before you begin to read the story, try to imagine how it would develop and what conclusion it might arrive at. Okay, so the text ko jiba ta body ko. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one would see the river and the field of ripe cotton dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lenko, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Okay, now we are really going to get some water. Woman, the woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller one were playing near the house until the woman called them all. Okay, come for dinner. It was during the meal that, just as Lenko had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of cloud be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little one are 5. Okay. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. Okay, this truly did resolve new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen falls. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes as quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Okay, not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lenko's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a flock of locust ହେଲା some like ତାକୁ କହନ୍ତି କଣ କହନ୍ତି ପୋକ ଯେ ଲାଗି ଯାଏ ନା ଶସ୍ୟରେ would have left more than this. The hail has left nothing. This year will have no corn. Okay, that night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We'll go hungry this year.
But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Okay, don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's why they say no one dies of hunger. Although the night, Lenko thought only of one hope, the hope of God, whose eyes, as he had been instructed, say everything, even what is deep in one's conscience. Lenko was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Saturday at that daybreak, sorry, Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Okay, so okay, God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I needed 100 pigeons in order to sow my field again and to live until the crops comes because the hailstorm. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman he knew that address. The postmaster, a flat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapped the letter on his desk. Acha. Commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Starting off a correspondence with God. Okay, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. Okay, he put the money in an envelope addressed to Lenko, and with it a letter containing only a single word as a signature, God. Okay, the following Sunday, Lenko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lenko showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Linko what he had requested. So this is the story. Immediately, Linko went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brows caused by the effort he had to make to express his idea. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. Okay, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. Okay, but don't send it to me
throw the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Linko. So it's a good like prose. So आमे टिके author विषय रे पढ़िबा तापरे स्टोरी को जिबा ओके पिला माने के रिप्लाई तो करो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेसिकली ए स्टोरी टा कोन की कहि परिबो एनी आइडिया के जे Ma'am, पढ़ि ମୁଁ चते କହିପାରିବି। Ma'am, स्टार्ट ମୁଁ करो यस को ମ୍ୟାମ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମର ଲେଞ୍ଚ ହଉଛି ଜଣେ ଫାର୍ମର ଯିଏକି ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ରକ୍ଷା କେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏ ଷ୍ଟୋରିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଲେଞ୍ଚ ଯିଏକି ଆମର ପାହାଡ଼ ଛୋଟ ଭ୍ୟାଲିର କ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଲରେ ସେ ରହୁଥିଲା ତା ପରିବାର ସହିତ ଏବଂ ସେ ତା ଜମିକୁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟିମେଟଲି କ୍ଲୋଜଲି ଜାଣିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦିନ ସାରା କେବଳ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସ୍କାଏକୁ ଦେଖୁଥିଲା Ma'am, I କେବଳ can ବର୍ଷା explain. ପାଇଁ। तो से Ma'am, कहि I सन can तापर मु explain. सुनिबी मु सुनिबी जणे जणे को से कहू तापर ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଦିନ ସାରା ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖାଗଲା ଯେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସ୍କାଏରୁ ମେଘ ଉଠେଇ ଆସିଛି ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ରାତିର ହାଲକା ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଓମେନ୍ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣିକିରି କହିଲେ ହଁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିକିରି କହିଲେ ଯେ କି ଆମର ରାତିର ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ହଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୟା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ ପିଲାମାନେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ ଖଟୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମା ବା ତାଙ୍କ ଲେଞ୍ଚର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଭୋଜନ ସମୟରେ ଲେଞ୍ଚ ପ୍ରେଡିକେଟ କଲେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶରୁ ବଡ ବଡ ବାଦଲ ଗୁଡିକ ଆସି ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା को ମ୍ୟାମ୍ ବାବା ଆଜ୍ଞା ସେ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେ ବର୍ଷାକୁ ଅନୁଭବ କରିସାରିବା ପରେ ଘରକୁ ଆସିକିରି କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏହି ଯୋଉ ବର୍ଷାର ବଡ ବୁନ୍ଦା ଗୁଡିକ 10 ପିସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଛୋଟ ବୁନ୍ଦା ଗୁଡିକ 10 ପିସେସ୍ ଏହା ପରେ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶରୁ ମାନେ ହିଲ୍ସମ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ମଳୟ ଆସିଲା ଯୋଉଟା କି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଇ ଲେଞ୍ଚର ସମଗ୍ର ଫିଲ୍ଡକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଯେପରିକି ଲାଗୁଥିଲା ଲୁଣର ଚାଷ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ଘୋଡାଇ ହୋଇ ରହିଛି ଏହାର ସକାଳ ହେବା ପରେ ଲେଞ୍ଚ ଯାଇ ତା ଫିଲ୍ଡର ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏହା ଶୀଘ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷା ଏଇ ହିଲ୍ସ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ହୋଲ ଭ୍ୟାଲି ଲେଞ୍ଚର ଘର ସମସ୍ତ ଠାରେ ଏହି କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଲେଞ୍ଚର ମନ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଲେଞ୍ଚ କହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଦଳେ ପଙ୍ଗପାଳ ଆସିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ସେମାନେ କିଛି ଛାଡିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ହିଲ୍ସମ କିଛି ହେଲେ ଛାଡିଲା ନାହିଁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲେଞ୍ଚ ଯେହେତୁ ସେ ଏକାକୀ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ତା ପରିବାରର ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଲେଞ୍ଚ କହିଲେ ଯେ କେହି ହେଲେ ଆମେ ଏହି ବର୍ଷ ଭୋକରେ ରହିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡିଆରେ ମାନେ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କହିଲା ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହା ହେଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ରାତି ସାରା ଲେଞ୍ଚ ଶୋଇ ନଥିଲା ସେଠୁ ଲେଞ୍ଚ
केवल भगवान का कथा भाबुतला जे कि हम अंतरात्मा थिबा समस्त कथा जानी पारि छांती एहार पूरा भोर लेंच को लेटर लिखला भगवान को पखु जे लेटर नेगी से टाउन को जाइतला पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस से लेटर को डिलीट करतला से लेटर लिखतले जे हे भगवान मोर शस्य जेहेतु नष्ट हो जाय छी नुवा मंजी बुणिबा पे एवं नूतन शस्य उत्पादन करी କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ତେଣୁ ମୁଁ 100% ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ଏନଭଲପ ଉପରେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଟୁ ଗଡ୍ ଏହା ପରେ ସେହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ବୋଲି କହୁଥାଉ ସେ ଏହି ଚିଠିଟାକୁ ଦେଖି ହସି ହସି ତାଙ୍କ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ହସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ହସିବା ସମୟରେ ମାନେ ଆମର ସେ सीरियस हो जाइतले सीरियस ही कहले एवं से चिट्ठी को लेंचर से चिट्ठी को से डेस्क से ऊपर थोइतले कहले कि भगवान के ऊपर तांकर कि विश्वास रही छी एहर परवर्ती समय से भाबिले जे लेंचर को भगवान के ऊपर था विश्वास को से भांगीबे नै सेटा कि रेडा शॉर्ट रे टी कहि परिबो Lencho was a hardworking farmer who lived with his family on the crest of a low hill. As a farmer, he knew his fields intimately. ओडिया रे को समस्त बुझबे ओडिया रे को समस्त बुझबे सर मैम लेंचो जने एक हार्डवर्किंग फार्मर थिला से जने कठिन परिश्रमी कृषक थिले से ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁ okay mu कहूची the house the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill so what do you mean by crest crest आगो देखि दबा crest मान हैला top highest part of the hill ताहाले गोटे hill रो गोटे माउंटेन रो बा गोटे hill रो सबुटु top part highest part सबुटु upper part को crest कहंती okay yes ma'am से कहूची तो गोटे से हाउस टा तारो जो एंटायर वैली से जो पर्वत ऊपर जो प्लेस टा थाई लिविंग प्लेस ताको वैली कहंती तो सेटा कोन थिला लो हिल रो सबुटु टॉप रे थिला हला from this height one would see the river and the field तो सेही हाइट रु जने कोन देखि परिबो ना रिवर देखि परिबो आ तारो जो कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर माने जो कॉर्न फील्ड हला तो राइस माने जोड़ा पाची थिवो माने जोड़ा कहंदी ना धान पाकड़ हो जाइथिवो तो सेही जोड़ा हे जाइथिवो ऑलरेडी तो सेटा को से देखि पारिबो तो फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस a good harvest okay the only thing the earth needed was a downpour or a list of shower acha तो सबु शस्य पई हमर कोन दरकार रेन दरकार रेन इज नीडेड फॉर ऑल द थिंग्स जहां भी हमें चाष करूचे सबु पई कोन दरकार रेन दरकार ना पानी कोठु आसीबो पानी तो दरकार सेति पई कोन कोन दी जोटे कोन हैला किछ नै हां जो सेति पई कोन दी ना जेबे लाइक हमर वर्षा होनी सेबे कोन दी ड्रॉट हे जे तमने कोन मरुडी पड़ी जाई जेबे कहंदी कि वर्षा हेई जे ठीक वर्षा हबा दरकार वर्षा अधिक हेले हमर फ्लड हे जिवो वर्षा कम हेले हमर मरुडी हे जिवो तो हमकु जो शस्य पई जेति की दरकार तमे माने देखिथिबो सबु प्रकार रो आइटम माने सबु प्रकार रो लाइक सीरियल्स हो बा फ्रूट्स हो सबुडी हुएनी लाइक आमे एठी एप्पल फैपल ग्रो करि परिबनी सेटा ठंडा जगह रे हुए सेटा कोडी हबो जम्मू कश्मीर एरिया रे हबो लद्दाख एरिया रे हबो जोगुडा की हाई माने हिल टॉप रे जो एरिया गुडा तो से अनुसार हमर सबु प्रकार रो शस्य पई अमाउंट ऑफ वाटर थाए कोटा बेसी दरकार कोटा कम दरकार लाइक बाउंस जदी हमें एटा भी गोटे हे गलानी ना देखिबो तमे नॉर्थ ईस्ट मान करे जो लाइक मेघालय फेगालय से माने कोन करंती बांबोरो भी ये करंती चाष करंती काहे की ना सेथुरु भी हमें बहुत सारा डेकोरेटेड सामान नेसेसरी जिंस मैट हैला पड़ीथिला ना पूर्व थरक तो सेटा कोन सेटा टिके बेसी नीड करे पानी तो से अनुसार से कोन ता कॉर्न फील्ड रे कोन थिला पानी रो अपेक्षा रे थिला हला थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू
his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast. अच्छा हमर जितबे नॉर्मली मॉनसून टा आसे जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आसे तो से कोन करथिला से जो फार्मर थिला जे लेंचो से कोन कला कोन माने सकाळू किछि न करी कि काहार वेट करथिला माने स्काई को अनै थिला नॉर्थ ईस्ट रे काहे कि ना जेतबे मेघ आसे जेतबे वर्षा आसे जेतबे पूरा बादल फादल घोड़ी हे कि आसे हां कि नहीं आमे ता पूर्वरु जानि दउ ह मेघ हबो तो सिम्पटम्स आमे सेति में जहा जहा सुखै थाउ छात उपरु हो कि बाड़ी रे हो नै आसु काहे ना आमे जानि दउ ह एठी घोड़ेलानी तो मेघ आसीबो हां कि नहीं नॉलेज से कोन पय आकाश को नै थांदा वर्षा पय तो Yes, ma'am. Now we are really going to get some water. The woman who was preparing supper replied it a woman mane the स्त्री हे जीवन निश्चय as per the my माने opinion तो से कौन तैयारी करथला supper means the last meal of the day like तमे जोटा राती रे जोडा खाउछ एक्चुअली सेटा को supper कहंदी ओके तो से दल तैयारी करथला yes god willing okay से कहला सुपर हां एडा सपर ना सुपर एडा supper 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 ओके super is SUPR super double P हेले supper okay बुझिलो यस मैम the older boys were working in the field अच्छा तार जे सबटु बड़ पुओ थिला से फील्ड रे कोन करथिला काम करथिला while the smaller one were playing near the house until the woman called to them all come for dinner तो तार जो बड़ पुओ थिला एल्डर वन जे से कोन करथिला ना फील्ड रे काम करथिला तार छोटो जे पुओ थिला से कोन करथिला खेलुथिला ई पाखरे ता घर पाखरे खेलुथिला जे पर्यंत से वुमेन स्त्री लोक न डाकिची खाइबा को आस इवनिंग रे माने सॉरी माने लास्ट मील खाइबा को आस माने डिनर करी आस नॉर्मली इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एंड लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल अच्छा तो लेंचो प्रेडिक्ट करिथिला कि माने से जो जेतडे से माने खाउथिले तांकर सपर तो प्रेडिक्ट करथिला कि कोन वर्षा हबो ड्रॉप्स रेन बिगेन टू वर्षा हबो इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could been seen approaching north east को देखिला को कोन माने जो क्लाउड्स गुडा को जोडा वर्षा रो जो बादल से गुडा को कोन घोड़ी ही जाइथिबो माने आसुथिबो बादल तो एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट जेतले नॉर्मली वर्षा हबा को थाए सेतबेले ठंडा पवन बुहे ना आ माउंटेन माने के तो बेसी हुई काहे कि ना दे आर क्लोज टू द स्काई माने लाइक तांको फीट ऑफ डिस्टेंस कम थाए तो सेठी भाई जेतु आमे जेतबेले समर सीजन हुए आमे कोन को आमे हिल स्टेशन जीवो माउंटेन जीवो काहे कि कैन सिट ना कोन थाए ठंडा थाए हां कि नहीं यस मैम Yes, the ma'am. man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body तो लेंचो द मैन काहा को एठी कुहा जिछि ना लेंचो को से कोन कला ना पळेला बाहर को तार खुशी नवा पय रेन ड्रॉप जो फॉल हबो ता बॉडी रे तार खुशी नवा पय नॉर्मली भी समर रे जतबेले वर्षा हो न थाए हम बहुत गरम रे थाउ हठात वर्षा आसी जाय हम भी खुशी हे कि बाहर को पड़ाउ ना कि घिमिरी मरी जीव एंड ऑल्स थाए ना गा माने के रेड आउट थाए हो वर्षा बाड़ी घिमिरी मरी जीव तो समस्ते खुशी है कि के छात ऊपर कि बाड़ी पट लाइक आम ऊपर टे वर्षा पड़ू इतने गरम होउची हम भी नॉर्मली या करू हां कि नहीं यस and when he returned he exclaimed these are not raindrops falling from the sky they are new coins so se the return करी के आसिला फील करी कि ता बॉडी रे रेन तो से कोन करला से कहिला exclaimed means माने से प्लेजरली कहिला लाइक गोटे सरप्राइजिंगली प्लेजरली कहिला खुशी रे कहिला कि एटा रेनड्रॉप नुहो एगुडा को रेनड्रॉप नुहो एगुडा हला न्यू कॉइन्स माने नॉर्मली जेतोले जे जो इनसे चाहू थाए जेतोले मिली जाए से जले खुशी हुए तो फार्मर कोन चाहिबो मोर भलो वर्षा हो मोर भलो फसल अमल हो हां कि नहीं पिले बुझिला Yes, ma'am. अरे 18 जन रु 9 गण हो गले
मैम पळैले सब तो काहे की पढ़ी चंदी बोली चैप्टर टा okay the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5 नहीं नहीं माने किसी like there is there many problem माने कौन पाए कि पढ़ेले actually माने धीरे बुझे जाऊ ना कौन problem कौन होची नाइ मैम किछि प्रॉब्लम होनी तो से कहला हाँ तो से कहला कि जो बड़ा बड़ा जो ड्रॉप पड़िला सेला 10 सेंट पीस सेंट मींस 100 हैला आउ जो छोटो गुडा कहला लिटिल वन आर 5 सेंट पीसेस तो से खुशी हे गला नॉर्मली जे जोडा काहे सेटा मिली गले से नॉर्मली खुशी हुए जेमती गोटे फार्मर रो दरकार तार भलो रेन हो तार क्रॉप गुडा को भलो से हार्वेस्टिंग हो गोटे बिजनेसमैन दरकार तार भलो प्रॉफिट हो तो सेतरे से खुशी होंदी राइट who is saying boring class Susmita to everyone okay ma'am English रे भिकारी सब्जेक्ट सॉरी बुझी पाले नहीं ma'am English रे भिकारी is Durga are you there okay stop it okay चलो हमें हम काम करिया जहा को रहर अछि रुह क्लास रे अदरवाइज यू मे गो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम okay with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain okay draped means देखि दवा आरो कोन देछि कॉटन माने कोन कोच इन कॉटन गोटे मिनिट कोच draped means cover okay कोडी थिला रे हमरो इट इज लाइक दिस कर्टेन माने कोन कहलो एटी ड्रैप कवर कर्टेन माने कहूची कर्टेन माने कोन कहलो पर्दा कोन हिला हां मैम कर्टेन माने कोन पर्दा की पर्दा कर्टेन को पर्दा कहंदी ओके तो से कहूची कि रेन रो ड्रैफ्ट मींस कवर करियो हला लाइक हमर कर्टेन बा पीस ऑफ कर्टेन कोन करे कवर करी रखी ना लाइक रूम को कवर करी रखी एंड ऑल तो से ही कहूची तोर तार कोन माने रेन ता तार कॉर्न फील्ड को पूरा कवर करी रखितला okay but suddenly a strong wind began to blow किंतु संगे संग कोन हला गुटे बहुत जोर से पवन हला along with the rain very large hailstones began to fall जेतोले बहुत जोर से पवन से तो वर्षा हुए सेतोले हमें कहू ना एडा माने बात्या टाइप्स हला माने बहुत जोर से पवन हला पवन से तो वर्षा जेतोले जोर हुए तो सेटा को hailstones भी कहंती ओके This truly did resolve new silver coin. Okay, the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen balls. अच्छा जितोले हमरो ये वर्षा हुए कौन सेटा कहंती हमरो कुआ पत्थर टाइप रो पड़े ना हां मैम सेटा को frozen balls बोली कहछि balls means मोती माने कोन हला मोती माने कोन मोती को कलर रो थाए व्हाइट कलर रो तो से फ्रोजन माने कोन जेटा फ्रीज हेतियो जो जिंसडा को सेटा फ्रोजन आइटम कहंती लाइक फ्रोजन हमरो जते को फ्रोजन आइटम रहिला जोटा फ्रीज रे रहे ताको फ्रोजन आइटम कहंती तो ता माने से कोन कहछि जो बरफ खंडर जो छोटो आकारटा को कुआ पत्थर कहंती जोटा रेन रे पड़े हैला तो नॉर्मली कुआ पत्थर पड़ले हम भी समस्त जाई कलेक्ट करू हां कि नहीं यस मैम कुआ पत्थर वर्षा हो जाय कि हम कलेक्ट करू तो तार पुओ सेया कला इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन तो जेते बेले बहुत हेलस्टॉर्म हैला लाइक पवन जोर से बहे की वर्षा हैला तो जेते बेले जेति की अमाउंट रे रेनफॉल दरकार थाडू एक्सेस हैला आ पवन टा कोन हुए सॉइल टा को उड़े नै जाय नष्ट कर दिए सब जिंस हैला आई होप इट पासेस क्विकली तो से माने होप कले कि जल्दी जल्दी ए झड़ाटा पड़ाऊ जेटा नॉर्मली हमें झड़ कहू
ହେଲା it did not pass quickly किंतु से झड़ा जल्दी गलानी for an hour the hail rained on the house पूरा गोटे घंटा धरी पवन सहित वर्षा हैला the garden the hillside the cornfield on the whole valley सबु जगह रे गार्डन रे हिलसाइड रे कॉर्नफील्ड रे तांको वैली रे सबु जगह रे the field was white as if covered with salt अब जैसे सेटा पूरा फील्ड हे गला कोथरे कवर with salt like से सॉल्ट एक्चुअली सॉल्ट रे कवर हेलानी जेतबेले कुआ पत्थर पडिला सेटा धळा कलर रो तो जेतबेले सेटा पूरा बिछेई ही पडै छी बसे तळे हमहु कोन लागो जेमति कि धळा कलर माने हमहु सॉल्ट पडी छी बोली से तारे एग्जांपल देई छी बुझी परलो आज इफ लिखला आज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट जेमिति देखा जाउची जे सॉल्ट रे कवर हे जाउची ओके यस मैम एक्चुअली कोन पडतिला कुआ पत्थर हां मैम not a leaf remained on the trees तो एमिति झड़ हैला नॉर्मली झड़ हले आमे भी जानि छे गछर जो ट्री गुडा टिके पाची जाई थाय लाइक के येलो कलर हे आस्ते बा ब्राउन कलर हे आस्ते बड़ा फॉल डाउन हे जाय तळे पड़ी जाय हां कि नहीं यस मैम जो गछ गुडा को बहुत वीक थाए से गुडा भी झड़ रे गळी पड़े हां मैम सजना गछ हैला एंड किछि गछ हैला जोटा वीक थिबो ता रूट रू सेटा गळी पड़े झड़ हेले बात्या हेले तो सब प्राय मैक्सिमम ट्री गळी पड़े हैला तो से कोची गछ रे गोटे पत्र भी रहिलानी नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज माने गछ रे गोटे पत्र भी रहिलानी द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड तार जो कॉर्न फील्ड रे कॉर्न थिला टोटली डिस्ट्रॉयड मींस खराब हे गला the flowers were gone from the plant जो flowers गुडा भी plant रे थिला सेडा भी झड़ी गला lencho's soul was filled with sadness तो जेतबेले एई सब जिंस हबो सेतबेले गोटे फार्मर obviously sad हे जबो yes ma'am when the storm had passed जेतबेले storm ता झड़ाटा पळेला he stood in the middle of the field and said to his son से कोन कला लेंचो कोन कला ता field रो बा तारो जो जोडी चाष करे ता फील्ड रो मिडिल को गला आ ता सन को कहिला a flock of locusts would have lived more than this तो से कहला एक्चुअली झड़ सब किछि नै जाय सब किछि उड़े निए तो लोकस्ट माने हला जो पोको लागि जानती गछ रे देखिछो ना जो ता कहंती नॉर्मल टा पंगपाळ हाँ पंगपाळ सब बास ओडिया रे ठीक कथा जो इंसेक्ट थांती ना जो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट डिस्ट्रॉय करनी जोडा क्रॉप को सेति पई हमें जो रासायनिक सार एटा सब पकाऊ बंचिया पई ता धरु राइट तो से ता मीनिंग हला से कहला कि जदी मो फील्ड रे मो क्रॉप रे से पंगुपाळ लागि थांदे से माने भी बहुत सारे जिंस रखी के जाई थांदे जे जोडा कि स्टॉर्म सब नेई गला a flock of locusts would have lived more than this से कहूची कि माने जदी मोर पंगुपाळ लागि थाले बा इंसेक्ट्स लागि थांदे मो फील्ड रे बा मो कॉर्न रे तो से माने भी बहुत दिन छाडी की जाई थांदे किंतु स्टॉर्म सब नेई गला the hail has left nothing तो से हेल काहा को डिस्क्राइब करची से स्टॉर्म को डिस्क्राइब करची तो सब नेई गला किछि भी रखिनी लेफ्ट नथिंग किछि भी रखिलानी this year we will have no corn तो एई वर्ष हम पाखरे किछि corn नथिबो that night was a sorrowful one तो सेई रातिडा तांको पई बहुत दुखर सहित से माने काटिथिले sorrowful माने दुख happiness माने happy ओके all our work for nothing हम जेते परिश्रम करथिले जेते कष्ट करथिले रे किछि मूल्य ही रहिलानी all our work for nothing there is no one who can help us अब के भी नाही जे कि हमको हेल्प करिवो we will go hungry this year एई वर्ष हमें भोकिला रहिबा इन द सेंस जेति कि तांको दरकार छै सेति मिलिबोनी ना पैसा मिलिबो ना तांको तांकर कॉर्न मिलिबो नथिंग विल लाइक तांको के किछि भी नथिबो नथिंग विल रिमेन विथ देम ना but in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope help from God तो एई सिचुएशन रे जत्ते बडे तुम पाखरे के नाहंदी हेल्प करियकू तमे एते मॉनेटरी फाइनेंशियली स्टेबल नुह तमे गोटे वैली रे रहूचो जोडी अपॉर्चुनिटीज आर लेस सेठी जणे ही हेल्प करि परिबो जेला गॉड आमे नॉर्मली जितले प्रॉब्लम रे थाउ माने जोथरे हमको बुद्धि बाटा दिसेनी तो हमें सब बड़े गॉड को ही रिमाइंड करू हां कि ना तो सीए भी सही टाइम रे गॉड को डाकिला बुझिला yes ma'am
समस्त लेफ्ट कहीं हो जो मुझे रीजन किसी जानी पारुनी मैम लेट ग्रुप रे हेलानी सेति भाई करथिले कि माने साउंड किछि सुबा होने बट आपनकर तो ठीक सुबि अछि आई थिंक तांकर इंटरनेट प्रॉब्लम अछि हाँ मैम ହେଇଥିବ समस्त धीरे धीरे कटि जाउजंती एबे मैम मात्र क्लास 6 कंटिन्यू जण करंतु साउंड किछि सुबुनी तमनो किछि लागुची कि नाइ मैम नहीं हमको ठीक मैम सुबुची हमको ठीक सुबा अछि एक्चुअली तांकर इंटरेस्ट ही नाही क्लास करिवारे मैम क्लास कंटिन्यू करंतु ओके ओ जण मेसेज करचंदी एक्चुअली ओके तो there was no acha don't be so upset even though this seems like a total loss remember no one dies of hunger तो से कहला कि don't be so upset तमे upset माने दुख प्रकाश करबा दरकार नै हैला even though seems like total loss एटा टोटली तांकर क्रॉप ही लॉस हे गला बट रिमेंबर मन रखो कि no one dies of hunger केही भी भोकिला मरिवे ओके दैट्स काई ना ता से काई सब कहिला काई ना ताकू गॉड ऊपर होप थिला से सेति में कहिला दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर तो से गॉड को ऊपर होप रखी कि जेतबे किछि हम पाके नथाय नॉर्मली हम गॉड को ही प्रे करू तो से गॉड को ऊपर होप रखी कहिला कि रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर केही भी भूखरे मरिवे ओके although the night Lencho thought only of one hope the help of God तो से पूरा नाइट गोटे ही दिन सब भाबुथिला कि गॉड हेल्प करिवे whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience Lencho was an ox of a man working like an animal in the field actually Lencho बहुत सारा काम करथिला ता फील्ड पई बहुत हार्ड वर्किंग थिला तो तार गॉड ऊपर होप थिला कि केही किछि न देखिले भी भगवान अछनी जे सब देखु जनी ताकू सब जणा अछि से इवन गोटे मनीषर कॉन्साइंस माने भितरे कोन चाली छि भी से बुझी पारंती ओके यस तो मैम हाँ तो वर्किंग हाँ लेंचो बहुत ही हार्ड वर्किंग थिला लाइक आमे कोन कहू बळद माने उनको नॉर्मली आमे फील्ड रे से माने काम करंती ना तो आमे नॉर्मली तू को बळद हे बोलू कि एते खटुचू आमे नॉर्मली कहू ना तो से Yes. गोचू वर्किंग लाइक अ एनिमल इन द फील्ड तो एनिमल काहे को कहै लेंचो को कहै जे कि से एनिमल भलिया माने लाइक कठिन परिश्रम करूथिला लाइक आमे बळद को जेतोले देखू सेतोले ही आमे सेटा प्रोनाउंस करी कहू कि तू बळद भलिया खटुचू हां कि नहीं तो ता माने Yes. बुझी पड़लो हाँ मैम बुझी पारी लेंचो इज नॉट ए एनिमल बट ताकू एई पोएट डिस्क्राइब करिचंदी कि से एनिमल भलिया खटुथिला ता फील्ड रे काहे कि ना से बहुत हार्ड वर्किंग थिला but still he knew how to write हला but से जानी थिला कि गॉड को केमिति लेटर लिखि हबो तो फॉलोइंग संडे माने तापर जो संडे टा आसे धर दिस इज संडे द नेक्स्ट संडे विल बी द फॉलोइंग संडे हला द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक से ब्रेक नहीं की माने डे ब्रेक माने मिड ऑफ द डे ब्रेक नहीं की he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail okay से गोटे लेटर लिखिला जोड़ा कि से निजे नै की गला टाउन को आ मेल बॉक्स रे पकेला it was nothing less than a letter to god एटा गोटे ता तरफ रो गोटे होप रो सहित गॉड को गोटे लेटर थिला so god he wrote से कोन लिखिला जानिबा if you don't help me my family and I will go hungry this year गॉड जदि तमे मते हेल्प न करिवो सहाय्य न करिवो एई वर्ष मु आ मो फैमिली भूखरे रहिबो आई नीड 100 pesos in order to sow my field again मते 100 peso माने 100 पैसा दरकार कोन पय दरकार टू सो माय फील्ड आउ थरे तारो फील्ड को कोन बुणीवा पय तारो कॉर्न रो मंजी ओके टू सो माय फील्ड अगेन and to leave until the crop come आउ मते रहे माने जे पर्यंत क्रॉप गुडा को पाची की हार्वेस्ट न हेची से पर्यंत मते रहे को पड़िबो बिकॉज़ ऑफ हेलस्टॉर्म काहे की ना ए जो झड़ हैला जो स्टॉर्म हैला सेति भाई तार सब लॉस हे गला ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप से एनवेलप रे पुरेला पुट द लेटर इनसाइड माने एनवेलप आनी की लेटर टाको पुरेला still troubled went to town
at the post तथापि ताकू प्रॉब्लम हैला काहे कि ना at the post office he place रे स्टैम्प से गोटे स्टैम्प लगेला लेटर ऊपर आ ताकू ड्रॉप करला कोठी मेल बॉक्स रे मेल सब पोस्ट ऑफिस रे गोटे रेड कलर रो बॉक्स थाए देखि चना पिले yes yes ma'am ma'am से हला मेल बॉक्स तो जेतोळे तमे कोन से चिट्ठी पके को जीवो बा किछि माने लाइक जेंति राखी बाकी पठांदी एंड ऑल तो सेठरे हमें पकाऊ तापरे सेटू पोस्टमैन काढी की तुम एड्रेस देखि कि से डिस्पैच करे अच्छा one of the employees who was a postman and also helped at the post office तो normally rural area माने गरे बैंक हो कि पोस्ट ऑफिस था माने पोस्ट ऑफिस हो जने के एम्प्लॉय थांदी जे कि हेल्प करन लाइक कोठी पकेवार अछि कोन लेखिबार अछि को स्टैम्प मारियार अछि तो सेमती जने एम्प्लॉय वन ऑफ द एम्प्लॉय माने जने एम्प्लॉय से पोस्ट ऑफिस रो जे कि पोस्टमैन थिला से कोन गला हेल्प करथिला ऑफिस रे पोस्ट ऑफिस रे went to his boss ता बॉस माने ता सीनियर ऑफिसर पोस्टमैन जे थिला तार सीनियर ऑफिसर पाखु से गला लाफिंग हार्टली बहुत माने हार्टली लाफिंग माने बहुत जोर से हंसी की गला एंड शोड हिम माने गोटे टाइप ऑफ जेतले हम का क्रिटिसाइज करे अंती हम सेही टाइप रे हसंदी एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड आउ से जाई कि से लेटर टा देखेला ता बॉस को नेकी देखेला किए से जो पोस्टमैन जे थिला तार ऊपर ऑफिसर को नेकी देखेला ओके yes ma'am से कहले कि मु मो कैरियर भितरे एमिति एड्रेस देखिनी बिकॉज़ गॉड रे एड्रेस का पाके अछि वी डोंट नो आमे खाली तांको होप करि परबा प्रे करि परबा बट वी डोंट नो वेयर ही इज लिविंग लाइक आम पाके तांका एड्रेस नै नॉर्मली मो पाके गोटे पिलर एड्रेस थिले मु पोस्ट लिखि परिबी आई कैन राइट अ लेटर एंड सेंड बट जहार पाके एड्रेस नाही गॉड को पाखरे कोन हमर एड्रेस अछि ना हमर गॉड को पाखरे अछि ना पोस्ट ऑफिस वाला को पाखे अछि कि no no ma'am ma'am okay the postmaster a fat amiable fellow person amiable means friendly से postmaster जे थिला से कोन थिला amiable friendly थिला और fat means you know fatty माने मोटा fellow also broke out laughing से भी सुन के हसिला but almost immediately he turned serious तापरे से serious है गला immediately serious है गला माने serious है गला in the sense हसुतिला से serious मोड को पड़े असला and tapping on the letter on his desk tapping means एमती बाड़ेबा इन द सेंस पिट्टीबा नुह तमे जदी कोटे जिंसटा धरचो धर पेन धरचो तमे ताको टेबल ऊपर जदी माने एमती नॉर्मली बाड़ेलो दी तीन थर टैप कहंदी लाइक आमे जदी टैप ऑन द शोल्डर आमे का को डाकिबू भीड़ रे जाउची बसे हम ताको डाकिबू आमे कोन करू तार पछ बड पिठी रे हम थापुडौ ना तो टैपिंग मींस एटा थापुडेबा yes ma'am बुझेला तो लेटर को तो थापुडेइबो ने लेटर को से एमती डेस्क रे एमती नॉर्मली हम भाबु थाउ नॉर्मली किछि टैप करू ना पेन हो कि पेन रो पेंसिल हो डेस्क ऊपर बुझि परछो टैपिंग माने yes ma'am बुझेला okay tapping the letter on his desk commented कोन कहिला what faith माने केते भरोसा I wish I had the faith the one who wrote this letter से कहला मो भितरे भी सेति की faith माने आई विश मु भाबु जी कि मो भितरे भी सेति की फेथ थांदा जोटा कि मैन बाखिर अछि जे गॉड को लेटर लिखिछि स्टार्टिंग ऑफ ए करेस्पोंडेंस विथ गॉड से द कथा माने कथा होछि लेटर लिखुछि ओके सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स in order not to shake the writer's faith in God the postmaster came up with an idea तो जेतो बडे जने पर्सन जने फार्मर जने फेथ करछि गॉड ऊपरे तो ता फेथ को जेमती सेक माने न भांगी जाऊ न सेक मींस दोहलिबा हमें नॉर्मली किछि ड्रिंक आनले कहू ने सेक इट वेल बा किछि जदी मेडिसिन आनु छ जोटा कि हमरो थाए कोन से सिरप मेडिसिन हम कोन को जे सेक इट वेल देन माने eat it एमती कहू जे ना और ड्रिंक इट नॉर्मली ए कहू जे ना हमें तो यार सेक माने कोन या सेक माने दोहले बनो सेक माने जो ट्रस्ट जो भांगी जीवा तो कोन सेक ओके जोड़ा माने कंप्लीटली नथिबो मझी जो दोहली थुबो लाइक दैट हला से माने लाइक तमे जहा जण को ऊपर फेथ करूथियो किंतु से तमको फेथ माने भरोसा करी कि कोटे जिंस देथिबो किंतु से तमको धरे रिटर्न करिवोनी किंतु तमे आगरु जानथिबो जे हां से रिटर्न करिवो बोली तमे ताकू देइचो तो सेठी कोन हैला तम फेथ ता सेक हे गला ना तमे नेक्स्ट टाइम ताकू भरोसा करिवो कि नो मैम तो से कहूची इन ऑर्डर नॉट टू तो तार जो गॉड ऊपर फेथ अछि ताकू न भांगीबा पई पोस्ट मास्टर बाके गोटे आईडिया थिला से कोन कले से लेटर आंसर देला
but when he opened it, जेतबेले से open कला, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill ink paper. किंतु से एई आइडिया देला कि जेतबेले से सेटा को काढिबो माने ओपन करिवो एनवेलप ता ताधरे माने इंक और पेपर रे लेखा किछि नथिबो ताबे कोन थिबो बट ही स्टॉक टू हिज रिजोल्यूशन ताबे कोन थिबो से कहिबो ना ताबे पैसा से देइथिबो तो से तार कथाटा रखिला स्टिक टू द रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन मींस समथिंग यू डिसाइडेड आउ तमे ता सहित तमे सेटा को स्टिक हे रहबो लाइक आमे कहू न्यू ईयर रिजोल्यूशन कोन न्यू ईयर रिजोल्यूशन माने कोन मु धरो ए न्यू ईयर माने कोन हला रिजोल्यूशन नहीं मैम इट वाज एविडेंट माने एविडेंट माने कोन एविडेंट माने जोड़ा सबूत कहंदी ओडी त कोन कहंदी रे माने लाइक प्रमाण प्रमाणित प्रमाण evidence means प्रमाण हला but he stuck to his resolution he asked for money from his employees से कोन कला निजो resolution means से जहा भाबितला जो आइडिया से आइडिया सहित स्टिक हे रहइला आउ से कोन कला मनी ता एम्प्लॉय मान थारु किछि मनी कलेक्ट कला से भी किछि ता सैलरी रो मनी पैसा देला तार किछि फ्रेंड्स मानन थारु कोन कला मनी कलेक्ट कला आज चैरिटी मींस तमे जेतोले कोनोसी भलो काम पाई कि पैसा दोजो ताकू चैरिटी कहंती जेमति हमें मंदिर रे चैरिटी करू हमें ओल्ड एज होम रे चैरिटी करू हमें जो अनाथ आश्रम रे चैरिटी करू चैरिटी माने किछि पैसा डोनेट करबा बा किछि भी क्लॉथेस हो देयर इज एनीथिंग चैरिटी रे बहुत दिन सजिबो जोडा कि सेही लोक माने को काम रे आसीबो बुझि परलो यस मैम if it was impossible for him it was impossible for him to gather together the 100 pesos तो ता पई किंतु एटा impossible हे गला कि समस्त मिसी कि 100 पेसो सने कलेक्ट करि परलेनी सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली a little more than half तो हाफ रु टिके अधिक लिटिल मोर देन हाफ माने कोन 100 पेसो रो हाफ हैला 50 पेसो तो लिटिल मोर देन माने 50 पेसो रु टिके अधिक हेले बुझी हला यस मैम समस्त को यार Yes, बुझिला यस little मैम more than half that means little more than half means total थिला 100 पेसो हाफ हेले केते हेला 50 किंतु लिटिल मोर देन माने 50 पेसो रु टिके एक्स्ट्रा he put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature word तो से कोन कला से पैसा टाकू से एनवेलप भितरे पुरेला तापरे गोटे वर्ड खाली से एनवेलप ऊपर लेखिला कंटेनिंग माने जोटा कंटेन करथिबो माने लेखा आइथिबो एनवेलप ऊपर ओके कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड जोटा कि गॉड कोन लिखिथिला से God लिखितले तो नॉर्मली सॉरी only sorry explain the contentment mu containing पढ़ी देली हां ऊपर ही अछि ना containing sorry a letter containing a single word as a signature god the following आमे को होने the letter is containing the name कहा ना रे आसीची हला the following sunday माने next sunday Yes, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. ता पर Sunday Lencho आसिला टिके जल्दी पळे आसिला bit earlier माने टिके जल्दी ता usual time रु टिके जल्दी पळे आसिला धर ता usual time 10 टा बेले से 9 टा बेले पळे आसिला बुझि परलो ता माने कोन शीघ्र पळे आस हां ए bit earlier to the usual time माने तमरो कॉलेज जिबार usual time बा स्कूल जिबार usual time is 10 am मु सपोज कहूची हारो केते थिबो एबे कोन चेंज होबे आई डोंट नो 10 am जदि तमे ता पुरगुरु टिके पळौचो ए bit earlier तमरो धरो कोछि काम होची तमे कहबो कि मु 9:45 रु पळेबी तो तमे usual time रु बिफोर जाइचो तो bit earlier than your usual time okay and ask if there was a letter for him अब जाकी कौन पचल्ला ता नारे किसी लेटर आसी छि की it was the postman himself who handed the letter to him तो से postman निजे से लेटर टाको handed कला काहाकू handover कला काहाकू लेंचो को sorry letter to him while the postmaster experiencing the contentment of a man
तो जेतबळे से पोस्टमैन हैंड ओवर कला से लेटर को लेंचो को सेतबळे पोस्टमास्टर कोन एक्सपीरियंस कला द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म गुड डीड looked on from his office. कंटेनमेंट मीन्स देखि दबा सैटिस्फैक्शन से जेतबळे हम कोनोसी जिंस पाई जाऊ हमर कोन आसे सैटिस्फैक्शन आसी जाय ना मन रे तो सीए पोस्टमास्टर कोन एक्सपीरियंस कला सेही लेंचोर जो सैटिस्फैक्शन ता ना मन रे जो सैटिस्फैक्शन ता आसीला काई ना से गोटे भलो काम करितला ऑब्वियसली पोस्टमास्टर गोटे भलो काम करथिला तो से कौन है पोस्ट ऑफिस भितर देखला लेंचो को डिक्लाइन वाज रिक्वेस्ट टू लीव द ट्रांसक्रिप्शन बी एनेबल्ड फॉर द मीटिंग डिक्लाइन एंड ओके डिक्लाइन करतो छाड़ तो ताको गोटे सैटिस्फैक्शन लागला कहीं ना गुड डीड माने भलो काम गुड डीड माने कोन भलो काम तो जदी हम किछि भलो काम करियो ऑब्वियसली हमको सैटिस्फाइड लागे कि नहीं हाँ कि नहीं जदी हमें काको हेल्प करी दिबा गोटे गुड डीड माने भलो काम जदी काको हेल्प करतेला हमको सैटिस्फैक्शन लागे सेतोले पोस्टमास्टर कोन एक्सपीरियंस करूतिला सैटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस करूतिला जेतोले से देखिला पोस्टमैन कोन करती हैंडेड ओवर करती लेटर टाकू काको लेंचो को हला तो लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money तो लेंचो जेतोले देखिला मनी अछि ऑब्वियसली सरप्राइज हे गेले बिकॉज़ से केबे एक्सपेक्ट करथिला कि गॉड ताको पैसा देबे ना his confidence but he became angry when he counted the money किंतु से रागी गला जेतोले मनी काउंट कला god could not have made a mistake से भाबिला god केमती मिस्टेक करि परिबे nor could he have denied lencho what he had requested आ केमती मना करि परिबे कि से जहा रिक्वेस्ट करथले ताको मिलिला नै लेंचो जहा रिक्वेस्ट करथला सेति की पैसा मिलिला नै so immediately Lencho went up to the window to ask for proper paper and ink एटा देखिला परे लेंचो कोन कला immediately से जो विंडो अछि पोस्ट ऑफिस रा सेठी की गला आ कहला मदर पेपर दियो इंक मींस पेन रे जो लेखन दियला on the public writing table अच्छा सब बैंक रे पोस्ट ऑफिस रे गोटे जागा थाए जोडी की तमे लेख पके की लेख नॉर्मली बैंक रे थाए पोस्ट ऑफिस तो लोक माने के जाऊ भी नांती बहुत रेयरली जाउछंती पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट से कोन लेखिला विथ मच ऑफ रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो जेतबळे रिंकलिंग हिज ब्रोज मींस आईब्रोज जेतबळे हमें कोन करू जो भाबू जेतबळे नॉर्मली हम आईब्रोज गुडा को ऊपर को पड़े ना नहीं तब कोनती रिंकलिंग ऑफ ब्रोज ओके जेतबळे हम कोन सुन भाबू हम आईब्रो गुडा एंती ऊपर को हे जाय हम कि नहीं यस मैम okay so caused by the effort he had to make to express his idea आ से को पई ता आईब्रोज गुडा ऊपर पड़ेले जेतबळे हमें कोनोसी आइडिया को एक्सप्रेस करू हम पखे धर वर्ड भाबिया को पड़े सेतबळे हम टिके भाबिले नॉर्मली आईब्रोज गुडा को ऊपर पड़े बेसी एग्जाम टाइम रे हुए तमे एटा एक्सपीरियंस बहुत करछो मु भी करिछि when he finished he went to the window to buy a stamp जेतबळे से लेखि सारला पेन एंड पेपर रे गॉड को लेटर सेतबळे कोन गला से पुनी विंडो बको गला और स्टैम्प किनिला हुइछि लिग माने छेपरे जो लगेबा को लिग कोनती यस मैम नॉर्मली आगो काले हुए बे तो हमें अठा फटे लगे दउछे मु प्राय देखि छि कि पैसा गणला भी देयर लीकिंग देयर लाइक ताको फिंगर को जिभरे लगे कि देयर काउंट करंती ना ओके तो से लिक द स्टैम्प एंड देन अफेक्स कला कोडी अफेक्स माने चिपकेबा एनवेलप रे with a blow of his fist माने नॉर्मली हमें देखि जो फटा लगे सला परे एडमिट कार्ड रे मुठा करी कि हमें एमती ताको पिटू करी छ बिले सब यस मैम करछि मु तो से कोची ब्लो विथ हिज फिस्ट ताको फिस्ट कोन जो मुठा डाको blow with his fist acha the moment the letter fell into the mailbox the postmaster went to open it जेतबळे से मेल टा बा से एनवेलप टा मेल बॉक्स रे पड़ी गला तापरे पोस्टमास्टर गला ताको ओपन गला it said god of the money that I asked for only 70 pesos reached me तो से कोन लिखाइतला
कि गॉड मु तुमको मागितली 100 ऑब्वियसली से 100 पैसा मागितला बट ताको 70 पैसा मिलेला तो से लिखितला गॉड ऑफ द मनी गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर मु जो मागितली तमे मते 70 पैसा देछ सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच तो मते रेस्ट अमाउंट भी दियो काहेला मते दरकार अछि बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल किंतु मेल थ्रू रे मते सेंड करिवनी बिकॉज़ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स काहेकि ना ताको पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय मानको ऊपर भरोसा नथिला क्रूक्स मींस डिसऑनेस्ट पर्सन से भाबुथिला कि ए भितरु मते किछि पैसा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय रखि पउछन्ती बुझिवल्लो यस मैम माने the story is showing us something funniest but yet the hope to the god तारो केते होप थिला गॉड को ऊपर माने आमे नॉर्मली गॉड को भी मानु ऑब्वियसली मानु आ खराब पडिले तो सब बडे ही मानु किछ खराब आसी गले ओके मैम तो ऑथर को कथा सुनिबा जीएल फेंटेस से जड़े मेक्सिकन नोवेलिस्ट थे जे के 1895 रे जन्म ग्रहण करथिले मेक्सिको रे दैट्स व्हाई से मेक्सिकन थिले काहे कि ना इंडिया पीपल माने इंडियन तो मेक्सिको रे पीपल कोन मेक्सिकन से जड़े पोएट जड़े नोवेलिस्ट जड़े जर्नलिस्ट आ कोन करथिले से एट द एज ऑफ 15 से राइटिंग तांगर स्टार्ट कर देथिले जेतोले मेक्सिकन रिवोल्यूशन चलथिला many of his books are related to civil conflict तांगर बहुत गुडे बुक्स माने रिलेट करे सिविल कॉन्फ्लिक्ट मींस जो वार फॉर व्हेन रिवोल्यूशन मींस कोन जेतोले कॉन्फ्लिक्ट चले वार चले से ऊपर हिज स्टोरीज आर एक्साइटिंग एंड ह्यूमरियस तांको स्टोरी गुडा को पढिबा को बहुत एक्साइटेड लागे माने बहुत रुचिकर and both humorous lage many of his works are concerned with the opposition of Americans से अमेरिका एक्चुअली नॉर्मली कौन हुए से बे बहुत अमेरिका एंड द ब्रिटिशर्स आर बहुत सारा कॉलोनियल बहुत सारा एरिया को कब्जा कर देथिले तो तांकर जेले कॉन्फ्लिक्ट चलथिला मीन सिविल वार चलथिला तो से ऑपोजिशन अमेरिका रो ऑपोजिशन ने से लेखन he was awarded national prize of arts and science in 1935 तो तांको गोटे अवार्ड मिलिथिला नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस 1935 तो क्रेस्ट माने मु कहितली द टॉप और द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द हिल dotted with माने scattered over an area scattered माने कोन प्ले कहिलो बिछरित है मु तो कहबी the ray of the sun has scattered all over my home बस बिछुरित होई पडियो जोडा कोंदी ओडिया रे scattered हला माने गोटे जगह रु जिंस आसियो बट सेटा डिवाइड हे कि चारियाडे पड जाउ scattered predict माने foretell of the future जोडा हमें प्रेडिक्शन करबा खाली वर्षा हबो कि शीत हबो बट वी डोंट नो एग्जैक्टली हबो ना नहीं तो सेटा को कहंती प्रेडिक्ट बा प्रेडिक्शन ओके ड्रेप मींस कवर लाइक द लाइक मु कहबी माय food is sorry food तो कहबी नहीं my room is draped with the curtains but the surprise is draped with the clothes वो ପାଇଁ जो सरप्राइज थिला सेटा पूरा कवर हेतिला कोथरे क्लॉथेस ओके तो एटा तो जानचो इंसेक्ट व फ्लाई इन द बिग ग्रुप जोडा को क्रॉप मानु को जोडा नष्ट करंती हला लोकस्ट अच्छा सॉलिटरी मींस लोनली और सिंगल अपसेट माने डिस्टर्ब हला सॉरी कॉन्साइंस माने इनर सेंस और राइट और रॉन्ग जोडा भितरे हमर चली थाए इनर सेंस रे हमें नॉर्मली किछटा जिंसडा भाबना एटा भूल हबो ना ठीक हबो तो कहंदी कॉन्साइंस जोडा कि गॉड भी जानि परंते हमें कहू ना हमें जहां भी गले गॉड जानि परबे हम इच्छा कोन जानि परबे पेसो पेसो माने करेंसी पैसा सेवरल लैटिन अमेरिका कंट्रीज तो पेसो ओके अमिएबल माने फ्रेंडली बा प्लीजेंट हला कॉरेस्पोंडेंस माने द एक्ट ऑफ राइटिंग लेटर कोन कहलो अमिएबल अमिकेबल एटा सब फ्रेंडली और प्लीजेंट हला रिजोल्यूशन माने फार्म डिसीजन मु कहनी हमें न्यू ईयर रिजोल्यूशन नो माने हमें गोटे जिंसो डिसाइड करबा ताको स्टिक हे कि रहबा सेटा को कहंती रिजोल्यूशन कंटेंटमेंट एंड सैटिस्फैक्शन ओके क्रूक्स माने डिसऑनेस्ट पर्सन बा जो माने की कोन जो माने की ऑनेस्ट नुहंती डिसऑनेस्ट पीपल बा डिसऑनेस्ट पर्सन ओके हमें कहन द मैन इज फुल ऑफ माने लोकर बहुत क्रिकेट माइंड जे माने भलो नुह डिसऑनेस्ट काम करन ओके तो यार एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन माने लॉन्ग ये थिला
तो मु समस्त को एतिकी कहबी कि जेते तमे ए चैप्टर टाको पढिबो तमरो प्रोनाउंसिएशन ठीक हबो जिनस धीरे धीरे बुझीबा को लागिवो आ जेते तमे पढिबो तमर नॉलेज टा गेन हबो तो नेक्स्ट संडे भितरे आई होप समस्ते से पोएट टा ए प्रोज टा एटलीस्ट मिनिमम 3 टाइम्स पढिथिबो ए वर्ड रा मीनिंग जानिथिबो प्लस एगुडा सब करिथिबो मु नेक्स्ट जो क्लास नेबी हम सब क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा एंड सेकेंडली मु जो तमा क्लास नउजी मु ता पूर्वरु किछि प्रिपेयर हेइनी कि मु केबे किछि पढाएनी हला जस्ट खाली मु रिक्वेस्ट रे आई एम जस्ट टेकिंग द क्लास तो सेति भाई मते ओवरऑल आईडिया नै मु जदी तुमको पढिया गुरु जिनसडा पढी देथिबी ताले मोर ओवरऑल आईडिया हेइ जाइथो बिकॉज मो जॉब एंड ऑल सब भितरे रही कि मु काली भी क्लास नहीं पारलेनी तो मु आउ थरी ताकू लुक आफ्टर करेनी सो दैट्स व्हाई मु इंस्टेंटली तुमको बुझौची गोटे थरे रीड मारी की ही बुझौची किंतु एक्चुअली कोन हुए सब वर्ड सबुठी लागेनी सब वर्ड रे बहुत सारा डिफरेंट मीनिंग भी थाए तो को सेंटेंस को नेकी ता मीनिंग कोन हबो दैट इज अल्टीमेट डिपेंड्स अपॉन दैट सेंटेंस मु तार एग्जांपल भी बहुत सारा तुमको देखै देबी परे लाइक मु गोटे जोडे एग्जांपल भी कहिथिले एठी पूरा एग्जैक्टली मन नै वर्ड टा देखिले जाना पड़िबो कंटेनिंग हो बा हमरो ऊपर गोटे थिला कंसेंस तो कहिथिले कंटेनिंग एठी गोटे जाउची ट्रैप्ड कहिथिले प्रेडिक्टेड कहिथिले आई थिंक क्रेस्ट कहिथिले तो बहुत सारा एमती वर्ड थाए तो जोडा कि मु नेक्स्ट क्लास रे आउडी भलो से कहिबी तुम जानि भी पारिबो ओके तो कोन हला तो टिके 3 टाइम्स 4 टाइम्स पढो आराम से जेते रीडिंग करिवो तमरो जोर जोर पार्टी रे रीडिंग करिवो तुम एबिलिटी सेते बढ़िवो तुम फ्लुएंसी सेते बढ़िवो तुमे इंग्लिश स्पीक करिया को तुमको इजी हो ओके एंड जो मानको भल लागुनी यू मे लीव द क्लास काहे कि ना एमिति आसी कि गले हमकु भी खराब लागियो लाइक माने कोन पई कि जाउचंती ओके कि मुटिके खाली ये कर दे स्टॉप शेयर कर दे एंड where is the